good morning to all of you. We again welcome Anvesh, and the topic of the day is the same interpretation of taxation statute. तो लास्ट सेशन में जो हम लोग का टेक अवे था, द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमा, और कॉमा में ये था कि जो मुझे समझ में आया, कॉमा भी पढ़ना पड़ेगा, दैट इम्पोर्टेंट. मोर ओवर द एग्जाम्पल विच ही अन्वेश हैज गिवन दैट द प्रॉपर्टी इज बीइंग डिवाइडेड बिटवीन A, B and C, and sometimes if they don't want to put Oxford comma, then in the law by way of example or illustration they say that property will be divided into three parts. So one thing more, इको आ रहा है सर, आवाज डबल आ रहा है मेरे तरफ से. नहीं, आपके इधर से डबल हो रहा है सर. So आपकी वॉइस इको हो रहा है. हाँ, लेकिन मेरी वॉइस क्यों इको होगी? हेलो, अब ठीक है? अब तो ठीक है. अभी ठीक है सर. हाँ, एक चीज मैं और बता देता हूँ. हम लोग ये पूरा इंटरप्रिटेशन का जो सेशन हो रहा है हम लोग के साथ, अन्वेष जो ले रहा है, एवरी इंटरप्रिटेशन विल हैव टू व्यूज. तो कहने का मतलब, अगर कोई जैसे सफारी रिट्रीट में टू व्यू था तभी तो सुप्रीम कोर्ट तक गया था. तो आप कोई एक थ्योरी लगाते हैं और रेस्पोंडेंट या पिटिशनर कोई और दूसरी थ्योरी लगाता है. तो एवरी थिंग विल हैव टू साइड्स ऑफ ए कॉइन. तो उसको भी ध्यान में रखिएगा ये करने के. और दूसरा, हम लोग को इंटरप्रिटेशन वो फॉलो करना है विच इज फेवरेबल टू आवर क्लाइंट, नॉट फेवरेबल टू द रेवेन्यू इफ देयर आर टू व्यूज ऑन इट. करेक्ट? सो अन्वेष, अगेन ओवर टू यू, प्लीज स्टार्ट. Now, as we did yesterday, this is also going to be an interactive session, or we will learn a lot by discussing with each other. And so rightly pointed out that when we are interpreting a law, we have to interpret each and everything that is written on a paper. But at the same time, we have to make one distinction between two terms. There is something called as interpretation. When you do an, there is interpretation. And then there is construction. Ideally, we use this word interchangeably. कि कभी कभार हम बोलते हैं कि इंटरप्रिटेशन ही कंस्ट्रक्शन है, कभी कभार हम बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन ही इंटरप्रिटेशन है. लेकिन इंटरप्रिटेशन इज फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ द लॉ. ओके, meaning what is actual meaning of the law, that is what we find. But construction is not for us. It is courts arriving at the true meaning of the law. So the ideal difference is interpretation हम करते हैं लेकिन construction court करता है. तो when we as tax consultants, when we as tax professionals read the law, all that we are doing is interpretation. But when courts do it and they lay down that this word has to be read as that, when they say that in this context or has to be read as and, or and has to be read as or, that is not interpretation, that is construction, and the power to construct is only vested with that of a court. This is the preliminary distinction. Now, here again in yesterday's discussion, we were talking about Oxford comma. Ideally, when we write the word or, कि जब हम or लिखते हैं तो उसके पहले हम comma नहीं डालते हैं, because or itself is a way to divide the sentence into two parts. But this is an Oxford comma that they have used here. Now, by virtue of that particular Oxford comma that has been created, fraud, comma, or, so that comma separates fraud from anything that is going to follow. But when we look at any willful misstatement, if they wanted to separate this, they would have put a comma here between this or and here. एक comma डालते, लेकिन उसने डाला नहीं. That means they only wanted to create two classes. So fraud becomes a separate class because before or they have put the comma. But willful misstatement space or उन लोगों के बीच में there is no comma. That means it is not a separate class. So willful misstatement or suppression of facts has to be read as single class. Okay, so this is ideally what we were discussing yesterday. Now, let us proceed to another question. Now, even this matter went up to Supreme Court for it to be properly read. The definition of governmental authority. Now, the definition of governmental authority we'll find in Notification 12/2017, which talks about exemptions. And certain services given by governmental authorities are exempt, as long as those are in relation to Article 243W or 243G. Let us not go into that exemption, but let us try to understand the word meaning of governmental authority. Hey kya? So here they have written governmental authority means an authority or a board or any other body. Clause A says either it must be set up by an act of parliament or state legislature,
or be established by any government. And then there is continuation. Okay, there is continuation. Now, if I were to actually show in law itself, just how they have written it, whether my screen is visible, that of taxman. No. Okay, now it is visible, sir. Yes. Now, here, this is how it is written in the notification. So, clause A is set up by the Act of Parliament. Clause B is established by any government. Then it continues. It does not stop there. Then it says that with 90% or more participation by way of equity control. Okay. Now, my question, okay, to the august members that are here is, A, with 90% or more participation jo hai, is it necessary when it is set up by Act of Parliament or state legislature, or it is only necessary when it is only established by government? Okay, so I will take it to here. Same thing which I had copied. Members, please participate. Question I will repeat it again so that हम लोगों को समझ में आएगा. हम गवर्नमेंटल अथॉरिटी का मीनिंग हम पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंटल अथॉरिटी क्या है. तो उसमें दो क्लॉजेस लगाया है. One is they say it must be set up by Parliament. So if something is set up by an Act of Parliament, let us say Institute of Chartered Accountants of India, ICI is set up by an Act of Parliament. So then comes the question whether ICI is a governmental authority, or is it not only there, is there a continuation like this with 90% or more participation by way of equity or control to carry out any function entrusted to municipality? मैं हिंदी में एक बार बता देता हूँ अन्वेश. सपोज ICI सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. क्या ICICI गवर्नमेंट अथॉरिटी तभी होगा जब उसका 90% और मोर पार्टिसिपेशन हो बाय वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल, एंड द कंडीशन इज दैट दे आर इंटरेस्टेड विद द फंक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी. या फिर 90% न भी हो तो भी ICI विल बी ट्रीटेड एज ए गवर्नमेंट अथॉरिटी. तो ये 90% और मोर पार्टिसिपेशन ये सिर्फ क्लॉज आई, ये दोनों के लिए, 1 क्लॉज आई और 2 दोनों के लिए, या सिर्फ 2 के लिए? 2 के लिए सर. Yes, only for 2. Only for 2. ओके. दोनों के लिए होने. देखिए, मुझे जो याद आ रहा है, पहले ये एस्टेब्लिश बाय एनी गवर्नमेंट कॉमा के बाद ये जो विथ 90% जो नेक्स्ट पैराग्राफ में है वो उसी के साथ था, विथ 90% और मोर. That is where I showed this, sir, because when I copy paste it comes as tables, but ideally the law is written like this. नहीं अन्वेश, जब बहुत पुराना लॉ देखोगे ना गवर्नमेंट अथॉरिटी का डेफिनेशन, तब उसमें ये कॉमा के बाद ही ये लाइन थी 90%. Yes. फिर इन्होंने चेंज किया. ये अभी 2017 का, पहले का कुछ प्री GST रिजीम के नोटिफिकेशंस अगर देखोगे तो कॉमा के बाद ही ये पैराग्राफ शुरू हो रहा था. फिर से आओ वर्ड में. अब जब ये पैराग्राफ चेंज हुआ, अब वो कॉमा जो ऑक्सफोर्ड कॉमा का अगर डेफिनेशन लिया जाए उसको ध्यान में रख के किया जाए तो ये कौन सा एक थ्योरी बताई थी, लास्ट एंटीसेड, क्या था? रूल ऑफ लास्ट एंटीसीडेंट, रूल ऑफ लास्ट एंटीसीडेंट एंड ऑक्सफोर्ड कॉमा. तो मैं तो जो भी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनको यही कहूंगा कि एक बार ये दोनों थ्योरी को अप्लाई करें, ऑक्सफोर्ड कॉमा और रूल ऑफ लास्ट एंटीसीडेंट, और फिर देन यू कैन एनालाइज बेटर. सेमी बॉडी के बाद कॉमा, उसके बाद क्लॉज आई लिख दिया, सेपरेट हो गया, फिर सेमी कॉलन के है, फिर और है. There is many things that is happening in this. 1, 2, 3 lines. गवर्नमेंट, उसके बाद कॉमा है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में है, कॉमा के बाद वो सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा है. प्लीज बख्शेट्टी जी. हाँ सर, बख्शेट्टी बोल रहे हैं. आई थिंक सेकंड को ही एप्लीकेबल होगा सर, ये फर्स्ट को नहीं होगा. कारण बताइए. Let us say that interpretation is correct. लेकिन क्यों आप ऐसा क्यों मानते हैं? ये फर्स्ट में है ना सर, लेजिस्लेचर के बाद में ना डॉट एंड कॉमा है. इसका भी एक मीनिंग है उसमें, अपना एक्ट में जो पढ़ते हैं हम, मतलब याद नहीं आ रहा है मेरे को, लेकिन है उसमें कि कॉमा के लिए क्या मीनिंग है और इसके लिए भी अलग से मीनिंग है उसका. खाली याद नहीं आ रहा है सर मेरे को. एग्री. जितेंद्र जी. सर मुझे भी ये एक्चुअली आई थिंक ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी आया है रिसेंटली, पता नहीं 2 साल हुए हैं उसमें, क्योंकि ये सर्विस टैक्स का इश्यू था और ये हमारे डिस्कशन भी हो चुका है कि वो दोनों को एप्लीकेबल होगा या खाली सेकंड को ही एप्लीकेबल होगा. पटना हाई कोर्ट का जजमेंट था आई थिंक पहले, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया है इसके ऊपर कि खाली सेकंड को ही एप्लीकेबल होगा. पर डिटेल में मुझे भी याद नहीं है. ये सेमीकोलन का ही है, वो सेमीकोलन आता है स्टेट लेजिस्लेचर के बाद, और यहाँ पे फिर वो विथ 90% है, वो भी मतलब
2 के नीचे से स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। You're right when you say that there is a recent Supreme Court judgment. The reason मैंने इसको क्यों लिया था कि there are to arrive at the meaning of governmental authority, lot of advance ruling applications were filed in the regime of GST itself, and in almost all the regime, in all the advance ruling ये आया था कि वो 90% सिर्फ क्लॉज 2 को नहीं क्लॉज 1 को भी अप्लाई होता है। यू मे चेक प्रॉब्ली आफ्टर दिस सेशन कि आप गवर्नमेंटल अथॉरिटी स्पेस है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग डालेंगे तो आपको 2-3-4 ऐसे एडवांस रूलिंग मिलेंगे कि वो बोलता है कि नहीं ए को भी अप्लाई होता है, बी को भी अप्लाई होता है। लेकिन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो आया था, जस्ट लुक टेक यू थ्रू द सम डिस्कशन, क्योंकि द इट्स नाइस टू रीड द डिस्कशन की डिस्कशन क्या होता है कोर्ट में। तो द आर्ग्यूमेंट्स अगर आप देखें तो आर्ग्यूमेंट्स में वो करते हैं, बोलते हैं कि इट इज firmly established that punctuation marks alone should not dictate the interpretation of statute. जब हम punctuation marks डालते हैं क्या वो इतना important है कि हमारा सारा का सारा interpretation ही बदल if it changes, should we do that interpretation? So the argument they say that it is firmly established that punctuation marks alone should not dictate the interpretation of statute, especially when meaning of the statute is clear without them. So अगर आप जब पढ़ते हैं आपको ऐसे ही समझ में आता है, so then there is no reason, there is no necessity to read those punctuation marks. This is also settled law. Courts normally say that punctuation should not be taken so seriously to alter the meaning of law that is there. Then Anumesh, punctuation means what? Semicolon or what? सब full stop, comma, semicolon सबके सब punctuation है। अच्छा। So they say that punctuation is not that important. अगर आपको sentence पढ़ने में जब आपको समझ में आए तो sentence ही पढ़िए, लेकिन अगर पंक्चुएशन से मीनिंग ही बदलता हो तो पंक्चुएशन को इतना ध्यान में मत रखिए। दैट वाज अ सबमिशन एंड इट वाज आल्सो सेटल्ड। सो द जनरल प्रिंसिपल इज दैट पंक्चुएशन मार्क्स कैरी लेस वेट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। जब हम रूल्स पढ़ते हैं, जब हम नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, दीज आर ऑल सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो अगर उसमें पंक्चुएशन इधर उधर हुआ है तो डोंट डू स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। सो दैट इज व्हाट इज सेटल्ड। फर्दरमोर, punctuation marks may convey different impressions and their interpretation should not be isolated but considered in conjunction with other clauses to discern the legislative intent. Beautiful sentence. They say punctuation marks may convey different impressions. कुछ बोलता होगा and their interpretation should not be isolated. When we say isolated का मतलब ये होता है कि it is separated from everything else. कि अगर let's say that in a classroom there are 50 students, अगर आप एक स्टूडेंट को निकाल के किसी दूसरा कमरे में बंद करो तो दैट स्टूडेंट गेट्स आइसोलेटेड। सो दे से दैट यू कांट इंटरप्रेट इन सच अ वे दैट वन इज रिमूव्ड एंड पुट इन सम डिफरेंट रूम। सो द इंटरप्रिटेशन शुड नॉट बी आइसोलेटेड बट कंसिडर्ड इन कंजंक्शन विद अदर क्लॉजेस टू डिसर्न द लेजिस्लेटिव इंटेंट। सो सिर्फ पंक्चुएशन को ही मत पढ़ो, क्लॉज ए को पढ़ो, क्लॉज बी को पढ़ो, देन यू अराइव कि वो कंट्रोल जो है whether government intended to add it to 1 as well as to 2. Don't go by comma. And they say that this is also settled by courts. So this is the beauty of interpretation. For every interpretation that we take, revenue has an equivalent and opposite judgment case laws. So they say that there is Barun Kumar ka judgment hai, Bihar ka judgment hai, these judgments which revenue wants to rely on. And then but we have to go to the end, because so that was also this only but look at how the court is addressing this entire judgment, the treatment. They say this is a service tax issue, as rightly pointed out by Jitendra ji. They say कि पहले 2S जो सर्विस टैक्स में था वो A था on the left hand side what we see, and then बाद में उन लोगों को amend करके they have done this, and when they amended this, the purpose of that amendment they said that we want to expand the scope of what comes under governmental authority. Okay, आप एक बार ये दोनों को पढ़िए कि पहले 2S में क्या था और बाद में 2S में क्या आया। पहले में था कि गवर्नमेंटल अथॉरिटी मीन्स अ बोर्ड और एन अथॉरिटी और एनी अदर बॉडी established with 90% or more participation by way of equity controlled by government and set up by an act of parliament or state legislature to carry out any function entrusted to a municipality under 243W. But either, so there was no clause A, clause B, and set up by an act of parliament was coming later. But here they have done other way around. पहले they have told it is set up by an act of parliament, बाद में उन लोगों ने बोला established by government with 90% or more. Now
Let us read clause 15. क्या बोलते हैं इसमें? They say that having read the two definitions, first and foremost, it is necessary to ascertain the objective behind the clarification notification. Now, this objective, ascertainment of objective is part of construction. Only courts can do that. हम नहीं कर सकते वो. Ascertain the objective behind the clarification notification, which amended the exemption notification and redefined governmental authority. A bare perusal of exemption notification reveals that exemption therein was only extended to those entities, that is boards or authorities or body, which fulfill three requisite conditions. Three conditions, one is having been established by 90% or more participation or set up by an act of parliament. Third thing is carrying on 243W wala business. Although the reason for redefining governmental authority has not been made available by the appellants, we presume, now this is only for court. We cannot do that. Presumption. Court बोलता है कि we presume that unworkability of the scheme for grant of exemption because the restricted definition of governmental authority was a trigger therefore, and there the scope of exemption was expanded to cover larger section of entities answering the definition of governmental authority. Now I'll take you to the last paras. Now 27, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं, so हम जो पढ़ रहे हैं इधर, we are understanding the meaning of वो semicolon. क्या उसको वो गलती से somebody typed it or whether it was intentional, तो that is where they say in para 27. Here बोलते हैं कि in the present case the use of semicolon is not trivial matter. It is not something very small, but a deliberate inclusion with a clear intention to differentiate it from clause 2. So this is what is very important. So the court is saying that semicolon जो डाला है वो trivial नहीं है, वो by mistake नहीं है, ऐसे ही किसी ने छाप दिया. It is deliberate and there was an intention to differentiate it between subclause 1 and subclause 2. So further it can be observed upon a plain and literal reading of clause 2 is that while there is a semicolon after subclause 1, subclause 2 closes with a comma. Correct? So this is what we see here also. कि subclause 1 ends with semicolon, लेकिन subclause 2 ends only with comma. इधर semicolon नहीं डाला. अगर इधर भी semicolon डालते, then this with the 90% was applicable for both I and AA. But because they have put only comma here, that means clause 2 has not ended because nothing can end with comma. Either it has to be a semicolon or it has to be a full stop. So because they have put comma, clause 2 has not come to an end with this particular line. Clause 2 continues till the very end. Okay. Now, this essentially supports the only possible construction that the use of comma after subclause 2 relates it with the long line provided after, and by no stretch of imagination the application of long line can be extended to subclause 1. Long line jab hum bolte hain, this is the long line that the court is referring to. This something that I'm marking in green, this is the long line. So this long line, court is saying it is only continuation of 2 and it cannot be attached with I. So this is what the judgment says. A beautiful judgment to understand interpretations of punctuation. I suggest members to go through this. So we'll come back to our discussion. Yesterday there was something that was left incomplete in the middle. Yeah, Anvesh, what is the conclusion? It is for both or? No. It is only for the second one. Second one only. Only for the second. Only for second one. Yes. Yes, sir. तो क्योंकि वो here if मुझे क्यों याद आ रहा है दोनों के लिए है? So here submitted that the impugned judgment broaden scope of the exemption include loss number therefore unfairly but now it is task. I'll point out here only. So for the reason we do not find merit in these appeals, the impugned judgments are upheld, the appeals are dismissed. So this entire case was filed. So it was a case by Commissioner of Customs versus that of Shahpurji, and so here there was a High Court judgment. IAT, whether their government so and so has defined so and so, appealed in so and so, retribution preferred by so and so was allowed under service tax. क्या है जजमेंट का नाम? 399.2023 ना? Shahpurji Palamji. It is for only the second one, sir, because it was filed by union and the judgment was dismissed. So union did not succeed in this case. The commissioner did not succeed, na? Yes. The commissioner was saying for both. दोनों का अप्लाई होना चाहिए. We are tasked to decide two civil appeal that center around a common question whether the educational institution in question, IIT or NIT,
आर कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंटल अथॉरिटी, है ना? Yes. लेकिन ये जो जजमेंट है, देखो मेरा क्या मानना है, ये जो जजमेंट आया था वो सर्विस टैक्स के रिजीम का था, Yes. और सर्विस टैक्स के रिजीम में जो पहले जो वो वाला जो पैराग्राफ दिखलाया गया था, दिखाओ एक बार फिर से, जहां पर 2 को सेक्शन 2 सबसेक्शन एस को कंपैरिजन किया गया था, एक में एग्जम्पशन और ये लिखा है वो ऊपर 2s पहले क्या था, अब क्या है, Correct. Yes. ये चैलेंज हुआ है, Correct. ये चैलेंज नहीं हुआ है। अगर इसको देखेंगे तो ये विथ 90% दोनों के लिए है, लेकिन अगर इसको देखेंगे तो किसी एक के लिए, ये मैं मानता हूं। I will come back to this one, sir. Operative part of judgments. हाँ, क्योंकि ये जो क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन आया था वो सिर्फ इसीलिए आया था। एक बार चेक करना इसको, है ना? Here, just going through only the operative parts of the judgment. Now, in para 30 of the judgment, they say that Bagchi heavily relied on the decision of a 5-judge bench in the case of Dilip Kumar. जो दिलीप कुमार का जो judgment आया था customs के केस में, and that actually overturned one of the long-standing judgment of a 3-member bench judge of the Supreme Court, जिसमें we were to read कि how do we read exemption notification. Now, ideally, in it was some sun engineering or something starting with sun. There was one case that was there for around 20 years. वो judgment में क्या बोला गया था कि let us say that there is an exemption which is given. Let us say there is a raw material which is put in work in progress, and then there is a final goods. Now, let us say that the final goods are exempted. If final goods are exempted, the question is whether work in progress जो है या raw material है, whether वो exemption उसको भी मिलेगा. Okay, that is the case. So we were actually fighting one case in which, let us say that जो एनिमल फीड्स बनाते हैं, जो हम कुत्ते बिल्ली के लिए जो खिलाते हैं वो पेडिग्री, जो हम एनिमल फीड्स बोलते हैं, जो पहले जो रॉ मटेरियल्स होता है वो फिश होता है, और वो फिश को पाउडर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटीन्स, और बाद में जो एनिमल का फूड जो बनता है, एनिमल फीड जो बनता है, तो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन एनिमल फूड को था. So then came a question कि when the exemption notification says that animal food is exempted, what I am manufacturing is what I have marked in yellow now. Okay. This is the fish meal, that powder, fish powder. Now the question is, if final product is exempted, whether the intermediate product is also exempted. Okay. This was the judgment, and this was the case. And for around 20 plus years, there was a 3-member bench judgment of the Supreme Court that said that what is the intention of the statute? That is, animal feed has to be exempted. So, if final product is exempted, then even the intermediary product must be exempted. But then, in 2018, there came a judgment of Dilip Kumar, wherein 5-member bench judge, they overturned this decision and they said, exemption notification to be read strictly. So then there is no scope for any modification as far as exemption notification is concerned. So अगर उसमें final product बोला गया है तो only final product को ही मिलेगा. Correct. But then this particular understanding also created lot of issues. आपने तो एक Medimix soap सुना होगा. जो जब भी हम होटल में जाते हैं, एटलीस्ट इन सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जब भी हम होटल में जाते हैं तो एक छोटा वाला सोप रखते हैं. या देयर इज आल्सो वी गेट दिस मैसूर सैंडल सोप्स. मैसूर सैंडल इज वेरी पॉपुलर सोप कंपनी फ्रॉम कर्नाटका. तो exemption notification said that you will get exemption from a part of the duty in central excise if you are using to burn the जो soap manufacturer में जो आग लगाते हैं, that has to be from firewoods. So when the law said कि आपको firewood का आग को यूज करना है, then came a question कि नहीं, मैं तो LPG गैस यूज करूंगा, क्या मुझे exemption मिलेगा? So department were saying नहीं, if the law says you are supposed to heat it with firewood, only firewood. Technology has changed, सब कुछ change हुआ है, firewood यूज करूंगा, the department were not agreeing. So this is, आप जब भी interpretation का जो भी केस लॉ आप पढ़ेंगे तो आपको दिलीप कुमार का जजमेंट जरूर देखने को मिलेगा, where they say that exemption notification has to be read very strictly and wherever possible in favor to the department. So exemption notification are always in favor to the department. अगर कुछ भी ambiguity है
in favor of the department, not in favor of the taxpayer. When we are reading the taxing statute, okay, so it is in favor of department, always in favor of department. But when we are reading statutory provisions, like हम अगर जब rules पढ़ेंगे या case law, rules पढ़ेंगे, section पढ़ेंगे, then ideally if there is confusion, then in favor of taxpayer. This is the normal rule of interpretation. So अगर exemption में confusion है, it will always go in favor of department. Statutory provision में confusion है, it will always go in favor of taxpayer. So either they say that in the case of Dilip Kumar, to us that in case of ambiguity in interpreting an exemption notification, the interpretation that favors the revenue must be adopted. That is what revenue is contending. इसमें confusion है, वो explanation clause 1 का apply होना है या clause 2 को. So exemption notification में दिया हुआ है. So if there is a confusion, you must read it in favor of revenue. And also the burden of proving applicability of exemption notification would be on SSC. This is also told in Dilip Kumar. So Dilip Kumar में ये बोला गया था कि it is for the SSC to prove that they are entitled for exemption. Ideally हम जो बोलते हैं, जब भी हम section 155 पढ़ते हैं of the GST Act, हम बोलते हैं कि the burden to prove only IT's eligibility is on the taxpayer and burden to prove everything else is on the department. But the question is, अगर मैं कुछ exemption लूँ and मैं बोलूँ कि मुझे वो exemption मिलेगा, the question is उसको who has to prove कि exemption मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? Whether I have to prove that I am entitled for exemption or whether the department has to prove that I am not entitled for exemption. अपने को ही प्रूव करने का सर. Yes. Yes sir. So it is by virtue of Dilip Kumar judgment, because when we read 155, it clearly says कि ITC eligibility हम लोगों को प्रूव करना है, बाकी का सारा 99% जो है वो डिपार्टमेंट को प्रूव करना है. But by virtue of Dilip Kumar judgment, the exemption applicability हमको प्रूव करना है, डिपार्टमेंट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है. Now, so then they say that at the outset we record that there is absolutely no quarrel with the proposition laid down therein. तो ये भी कोर्ट मानता है कि हम दिलीप कुमार को चैलेंज नहीं कर रहे, दिलीप कुमार जो लिखा है वो सही लिखा है. लेकिन वो क्या कहते हैं, we however reject the contention of so and so lawyer based on Dilip Kumar because the ratio is not applicable to the facts and circumstances of the case. ये केस को अप्लाई नहीं होता क्योंकि ये तब भी अप्लाई होता है जब ambiguity हो. There must be confusion. So the court says this is for the simple reason that there is no ambiguity as far as 2S interpretation is concerned. We are endorsed in our opinion that Latin maxim what quotis in verbis nulla est ambiguities ibi nulla expositio contra. ये आप free time में पढ़िएगा. I don't know what exactly how to read this, which means that when there is no ambiguity in the words, then no exposition contrary to the words to be made. Exposition का मतलब construction. तो अगर जब हम कानून पढ़ते हैं तब कुछ डाउट ही नहीं आया हमारे मन में. It is very clear कि semicolon separates it. So we have to read it like that. So there is no need for the courts to read it something differently. It is therefore clear as sunny day. It is very clear that there arises only one plausible construction of 2S, which is the one that Patna High Court adopted and which we are inclined to uphold. So Patna High Court ने भी यही माना था कि 1 is different, 2 is different. That entire continuation is only applicable to 2. Okay. So courts take this punctuation marks also very seriously. Yes sir, with your permission KK sir, I want to. हाँ ठीक है, we'll get back this because after change of law, next paragraph maybe something different has come. In the GST? हाँ in the GST. लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग बाद में देखेंगे इसको. GST is pari materia sir. The governmental authority का जो definition है, मैं समझ गया बात को, हम लोग बाद में देखेंगे इसको. ठीक है. Yes sir. आगे बढ़. Now we have to discuss one very important thing that we stopped yesterday. That is as far as the penalty portion was concerned. Ki when we read section 74, the last line of 74 makes a reference to penalty equivalent to the tax specified in the notice. Now the question that we left unanswered is whether that penalty equivalent, whether this is an independent power or whether it is a dependent power. Independent power or dependent power. We understand section 9 creates levy. But my question is, can notice be issued under section 9? Yes, okay, no. I want all of you, because I want to keep session very simple, कि जितना हो सके participate कीजिएगा, क्यों that
Even I get to learn something. नहीं, you cannot. नहीं, Nine. No. So 9 में हम levy, though there is levy, notice cannot be issued under 9. So उसका notice issue करना है, तो notice has to happen by virtue of 73 or 74. So as of now, I will write either 73 or 74. Now, as far as interest is concerned, 50. There is an imposition or there is a levy of charge of interest. Now, question is, can a notice come under section 50? no, no. No. तो उसका भी notice अगर जो आएगा, so ideally that will come under 73, 74. I'm not ignoring that straight recovery procedure. So this is 50. Now the question is, as far as penalty is concerned, Anvesh, take section 47. सर बक्सेटी बोलो. 47. There is late fee, 47. There is a levy for late fee. सर बक्सेटी बोल रहा हूँ. Yes, sir. आजकल इंटरेस्ट के लिए ना जो नोटिस आता है ना उसमें ऑर्डर्स करके लिखा रहता है. उसका मीनिंग क्या होगा फिर? जिसमें क्या है सर, किसमें? इंटरेस्ट का जो नोटिस आता है ना उसमें अभी आजकल सेक्शन 73 नहीं डालते, खाली ऑर्डर्स करके लिखते हैं. चाहे तो मैं एक आधा नोटिस कल शेयर कर देता हूँ आपको. हाँ. यस सर. We'll go through that notice. I'll just complete this third part of discussion. या. So 47 talks about late fee. Now, can under 47 we issue the notice? नो. No. Can the late fee be recovered under 73, 74? No. 73, 74 में भी नहीं आएगा, क्योंकि when we read the law, it clearly says, I will remove all this. So 74 says what can be recovered is any tax which has not been paid or short paid or anonymous refunded or where ITC has been so and so, fraud so and so. So here they only talk about portion of tax or ITC. एंड नीचे आते हैं वो बोलते हैं कि along with क्या आपको वो टैक्स इंटरेस्ट के साथ आप मांग सकते हैं एंड पेनाल्टी के साथ आप मांग सकते हैं, लेकिन देयर इज नो पावर टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 73 और 74 टू रिकवर लेट फी. देन कम्स द क्वेश्चन कि फिर लेट फीस कैसे रिकवर हो जाए, हो सकता है. 47 देयर इज नो पावर, 73 आल्सो देयर इज नो पावर. देन हाउ डू वी रिकवर? 122. So 122 लेट फी नहीं है सर, 122 पेनाल्टी है. ओके. Late fees is very different from that of a penalty. So late fee is a charge to regularize your mistake. Penalty is for contravention. अगर मुझे मेरा एग्जाम के लिए हॉल टिकट 10 तारीख तक देना है, लेकिन मैं 15 तारीख को दूं, 5 दिन का डिले है, तो वो जो लेट हुआ है 5 दिन का, टू रेगुलराइज दैट आई पे लेट फी. सो दैट इज नॉट पेनाल्टी. तो हाउ डू आई रिकवर लेट फी? इसीलिए मैक्सिमम लेट फीस सर जीएसटीआर 1(3)B में डाल दिया गया है रिटर्न. दैट इज वो अंडरस्टूड सर, लेकिन वो पोर्टल है, वो पोर्टल बोलता है कि मैं आपको फाइल ही नहीं करने दूंगा. दैट इज डिफरेंट. माय क्वेश्चन इज, लेट अस से किसी ने फाइनल रिटर्न नहीं फाइल किया है, 1(3)B फाइल नहीं किया है, जो पहले वाला, अब रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर चुका है, वैसा आदमी को कैन गवर्नमेंट से 73 का नोटिस इशू करेंगे और टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी मांगेंगे? क्वेश्चन इज लेट फी कैसे मांगेंगे? तो जनरली जो अभी देखने में आ रहा है वो ये देखने में आ रहा है कि 73 या 74 का जो नोटिस इशू होता है उसी के अंदर एक लाइन ये लेट फीस. करेक्ट, वो डालते हैं ऑफिसर, बट द क्वेश्चन इज 73 डज नॉट अलाउ यू टू डू दैट. फॉर एग्जांपल, कैन यू डिमांड ट्रांजिशन क्रेडिट इन सेक्शन 74? तो जो मैं पहले जो वैट के जमाने में मेरे जो क्रेडिट था, वो मैंने जीएसटी के एरा में आई हैव टेकन इट. कैन दैट बी रिकवर्ड अंडर सेक्शन 74 नोटिस? Notice has been issued. अरविंद सर जी, Notice has been issued under 74. Okay, but we are also taking argument that it cannot be issued under 74. correct, absolutely, because when the law gives you the power to do certain things, you must only do that thing. हम ऐसा इंटरप्रेट नहीं कर सकते, अगर पूरा कानून में 74 में अगर लेट फी का एक भी वर्ड ही नहीं है, then we cannot bring in something that is not existing. कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करके पढ़ो, बट इट डजंट मीन दैट यू रीइन्वेंट द लॉ. सो 74 में demand of late fee is not possible. Then Anvesh, it is there issuing under ASMT 10 also late fees. अगर ASMT 10 में लिखा होगा भी, then what happens? ASMT 10 को अगर मैं ASMT 11 में जवाब दूंगा, ASMT 12 अगर he is satisfied, if he is not satisfied, then how is that he is going to proceed with the recovery? Because ASMT 10 is an assessment procedure, not a demand procedure. So अगर उसको demand करना है, then he has no choice but to issue 73-74 notice. So imagine I don't respond only for his ASMT 10. Then how is he going to recover? Can he issue 73-74? Answer is no. अच्छा, one thing about transition credit. For transition credit, 73-74 notice can be issued because of Rule 121
और हमने ये सेशन में डिस्कस भी किया हुआ है। रूल 121 में साफ साफ लिखा हुआ है, और आप हमारी किताब देखेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ कैन एससीएन बी इशूड फॉर ट्रांजिशन क्रेडिट, रीड डेफिनेशन ऑफ आईटीसी एंड रूल 121, तो वो तो पॉसिबल है। I would transitional credit probably sir. I would consider at this point क्योंकि उधर गए तो ये थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। हाँ, और अब जब लेट फीस की बात आ रही है, अब जैसे इंटरेस्ट की बात आ गई, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट लिखा, लेकिन अगर सिर्फ टैक्स है ही नहीं, टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका, क्या सिर्फ इंटरेस्ट का नोटिस 73 74 में हो सकता है, नहीं हो सकता? तो यस, इट कैन बी डन ओनली इंटरेस्ट 73 74 में। डायरेक्ट रिकवरी भी पॉसिबल है, बट इंटरेस्ट इज ऑटोमेटिक, देयरफॉर डायरेक्ट रिकवरी इज पॉसिबल, बट इफ इंटरेस्ट इज नॉट ऑटोमेटिक देन द कोर्ट हैव डायरेक्टेड दैट टू इशू 73 74 for following the principles of natural justice. Now, late fees, can it be directly recoverable under section 75 subsection 12? If yes, then notice might be issued under section 73 74 also, though it is not written. Yes, your opinion. So here you're right sir, when you say 7512, because the opportunity of being heard is only necessary when there is something for the SSC to say to defend his case. But late fee as a provision is very simple. It says the date of filing was 20th. You file it on 25. So 5 days there is a delay. So the computation, everything is automatic. In those situations, I will share it in the groups also, where the court says that when everything is computed and that computation amount is also written in the law, SCN is not required. Correct. So as far as late fee is concerned, that is not following through 73 74. That has to be recovered straight by 75 12. अगर ऑफिसर आपको 73 74 दे, under 73 74 he cannot pass an order confirming late fee. If he wants it 75 12 में direct recovery को वो जा सकता है. That is one thing. But so 47 can only happen by way of direct recovery under 75 12. So there is no show cause notice for late fees is concerned. But then let us come to the very important part of today's discussion, penalty. Penalty is 122. There is 122, 123, 124. 125 is general penalty. There is 127 also. 126 is a general principle. Now, let us only talk about 122. Now, this talks about penalty. Now, the question is, now, whether notice can be issued under 122. That is a very simple question. Now, I am very sure that people would say that, no, if you refer to Rule 142, Rule 142 says that DRC 01 can be issued. Yes, no doubt. But the question is whether rule can say that whether SCN has to be issued or whether the section has to say whether the notice has to be issued. Now मान के चलिएगा कि Rule 142 में अगर वो लोग लिखे कि DRC 01 has to be issued in respect of section 50, क्या हम एक presumption ले सकते हैं कि 50 भी बोलता है show cause notice issue करने का? नहीं. अगर Rule 142 में लिखा हुआ that is under section DRC 01 has to be issued in the case of section 9, does it mean that section 9 के अंदर show cause notice issue होना चाहिए? Why I say this is because 122, when you read the law, 122 does not talk about show cause notice. 123, 124, 125 does not talk about show cause notice. Only section 126 subsection 3 talks about show cause notice. So now my question is, can the show cause notice be issued under section 122? Whether there is provision in the law, not talking about rule. Come again, Anvesh. Sir, इधर जो अगर मैं टैक्समैन का पेज दिख रहा है ना सर. हाँ. So here this is penalty for certain offences. So it 122(1) क्या बोलता है, where a taxable person who, and they go on just listing around 21 different types of offences. Okay, उतना ही बोलता है. They are not talking about issuance of show cause notice, nothing. 122(1) very simply says these are the 21 offences and what should be the amount of penalty. So इधर वो बोलते हैं कि your penalty shall be liable to a penalty of 10,000 or amount of tax evaded. So this is what 122(1) says. Here there is no mentioning of issuance of show cause notice. Correct. Then we will not 1A or 1B we will not come. Okay, we will directly jump into that of 2 because this is what the entire crux of the discussion. Even 122(2) में they create two categories, A and B. A they say non-fraud cases, B fraud cases. And they say कि in non-fraud cases हमारा जो penalty है that would be 10,000 rupees or 10% of tax whichever is higher. And in B cases they will say that penalty equivalent to 10,000 or tax due. Here total amount 100% equivalent. Here only 10% of the tax due. So here also if you see इधर भी notice का कुछ नहीं बोला है. मैं समझ गया.
मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या अगर मान लीजिए 122 सबसेक्शन 1 में अगर पेनल्टी लगानी हो तो उसका तरीका क्या होगा? 73 74 होगा या फिर डायरेक्ट 122 में वो नोटिस इशू कर सकता है? अगर वो डायरेक्ट 122 में नोटिस इशू कर सकता है तो कहाँ लिखा हुआ है? रूल में तो लिखा हुआ है, रूल 142 में, लेकिन 122 में पेनल्टी रिकवर करने के लिए कहीं मतलब सेक्शन में नहीं लिखा हुआ है। तो अन्वेष जी का एकदम सही क्वेश्चन है, क्या एक्ट में देखना है नोटिस इशू करने का पावर या रूल में देखना है नोटिस इशू? वैलिड क्वेश्चन, लेकिन हमने कई सारे नोटिसेस देखे हैं जहां पर 122 में वो पेनल्टी फेक आईटीसी में वो नोटिस जो इशू कर रहे हैं सेक्शन 122 में इशू कर रहे हैं और 122 सबसेक्शन 1 कहीं नहीं कर रहा है, यू आर अलाउड टू इशू द नोटिसेस। करेक्ट है? चलिए पूछिए आप बाकी लोगों से क्या ओपिनियन आता है। अरविंद जी, I have seen that they have mentioned section 73 read with 122, like that they have issued a notice. those things are perfectly possible. Our question is very limited to, can a notice ever be issued saying that this is a notice under section 122(1) or 122(2) to recover the penalty without having recourse to 73 or 74? Independently, we have not seen, sir. Okay. 129 का नोटिस कैसे इशू हो रहा है फिर? 129 is उसमें है सर, 129(3) में there is a power. है पावर? Yes. So in 129, एक बार निकालो 129 सबसेक्शन 3 में पावर है कि नहीं? here they say that the proper officer detaining the seizing goods so and so shall issue a notice. अच्छा, There is a power. Because why I ask this question? 120 अगर हम जब भी 73 74 का नोटिस देखेंगे, so there is a safeguard that is put under 75 जो jurisprudence है, वो बोलता है कि ऑफिसर को ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, अगर आप 30 दिन के अंदर जमा कर दो तो पेनल्टी माफ है, या only 15% you are supposed to pay, 25% that you are supposed to pay. All those things, the protection that is given in 73 and 74 are absent in 122. So if we were to say that if a notice can be independently issued under 122 without having recourse to 73 and 74, then whether I pay it immediately, whether I don't pay anything immediately, the penalty will not go. And all the protection that is given to me under section 75 becomes inapplicable here. And also, अगर हम ऐसा पढ़े कि 73 74 में हम separately notices issue कर सकते हैं, then there is one word in law, something called as otiose. which word? This is the word, otiose. Okay. Now otiose का मतलब ये है कि serving no practical purpose or result. कि जैसे कि जब हम पहले क्रिकेट मैच खेला करते थे कि हम ऑलवेज देयर वुड बी वन पर्सन दैट हम सिर्फ उसको टीम में लेते हैं, लेकिन उसको बैटिंग में नहीं देते हैं, बॉलिंग में नहीं देते हैं, फील्डिंग में नहीं देते, कुछ नहीं, सिर्फ टीम में लेते थे क्योंकि वो ही शुड नॉट क्राई. बट इन लॉ देयर इज नथिंग लाइक दैट. देयर इज नॉट इवन वन सिंगल फुल स्टॉप और अ कॉमा दैट इज नॉट सर्विंग द पर्पस. सो देन कम्स द क्वेश्चन कि अगर हम ये माने कि 73 74 में ही हम पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं, divorce or independent of section 122, then the only question that remains is कि the entire 122 का ये जो clause है, this becomes otiose, this becomes purposeless, meaningless. तो इसको हम कब यूज करें, कैसे यूज करें? तो मतलब ये होगा कि ये क्लॉज 2 सिर्फ इसलिए आया है ताकि आप क्लॉज 1 में 73 74 का नोटिस दे सके. Yes. ओके. So if a notice is only issued under 122, it has to be set aside because there is no power to issue notice under 122. लेकिन one more thing, if you आप अगर हम देखें 126 अगर हम जब पढ़े, that talks about general disciplines relating to the penalty. What are the general things that we need to? And there under 126(3) they say that no penalty shall be imposed on any person without giving you an opportunity of being heard. So अगर notices issue करना है, then वो notice issuance का power जो है that is under 126(3). But आप वो थॉट को होल्ड में रखिएगा क्योंकि 126 सबसेक्शन 6A बोलता है, अगर आपको यस स्क्रीन इज विजिबल नो सर? यस. 126 सबसेक्शन 6A बोलता है कि the provisions of this section shall not apply in cases where the penalty specified in this act is either a fixed sum or expressed as a fixed percentage. So fixed sum in 122(2) they talk about a fixed sum 10,000 rupees or 10% of the tax amount. तो उसको जो नोटिस इशू करना है वो 126 के भीतर भी आप इशू नहीं कर सकते. 126 के अंदर सिर्फ आप 125 का पेनल्टी नोटिस इशू कर सकते हो क्योंकि 125 when we see there is no fixed sum. They say that
any person who contravenes any provisions of this act or rules made thereunder for which no penalty is separately provided for, they say shall be liable to a penalty which may extend to 25,000 rupees. So ये fixed sum नहीं है, they बोलते हैं कि which may extend to. तो अगर आपने ऑफिस में आपने रजिस्ट्रेशन का बोर्ड नहीं डाला, officer need not confirm entire 50,000 rupees. He may say 40,000, 30,000. So it is not a fixed sum. So in that situation, again he cannot issue notice under 125 because 125 में notice issuance का power ही नहीं है. अगर ये 125 में आप पेनाल्टी के लिए लायबल हो, नोटिस हैज टू बी इशूड अंडर 126 सबसेक्शन 3. बट अगर 122 का जो आपने वायलेशन किया है उसका नोटिस 126(3) में नहीं आएगा, क्योंकि 126 सबसेक्शन 6 बोलता है कि ये सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल जब पेनाल्टी अ फिक्स्ड सम हो या परसेंटेज में लिखा हुआ हो. So the only meaning that we can assign is 122 का अगर हमें डिमांड करना है, then 122 में शोकस नोटिस का प्रावधान नहीं है. 126 में भी उसका प्रावधान नहीं है क्योंकि अमाउंट इज इन फिक्स्ड सम और फिक्स्ड परसेंटेज. So we have to take recourse only to 73 and 70. This is only in relation to registered persons. Okay, ठीक है. So one more thing, there's one 127 section also. 127. So this is a miscellaneous section where it is with none of the penalties covered under 74, 73. तो फिर इसमें इशू होगा, तो ये भी इम्पैक्ट होगा उससे. No. Let us read 127. क्या बोलते हैं उसमें? Where the proper officer is of the view that a person is liable to a penalty and the same is not covered under any proceeding. तो आप अगर if you want to do 62, 63, 64, 73, 74, 129, 130, he may issue an order levying such penalty after giving a reasonable opportunity of being heard. तो ये क्या होता है? See, this is where sometimes in GST everything is put in one section and sometimes one thing is split into 3 different sections. How I read is 125 जो है, this talks about general penalty, जिसमें where there is no penalty that is separately provided for 125, उसका नोटिस आप 126 में आप इशू करेंगे और उसका ऑर्डर आप 127 में पास करेंगे. और वी कैन ऑल्सो सी इट दिस वे कि अगर हम अनरजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट प्रोसीड करना चाहते हैं, देयर ऑल्सो वी कैन प्रोसीड अंडर 73, 74 ऑल्सो. देयर इज नो सच हार्म. So 127 is generally if your entire proceeding is not covered under 62, 63 and so on all those sections, then yes, you have to rely on 125, 126 and 127. अगर कि मान के चलिए कि फाइन टू फेल्यूर दिस स्टैटिस्टिक्स, आप अगर आपसे कुछ स्टैटिस्टिक्स मांगा गया है और आप वो स्टैटिस्टिक्स नहीं देंगे, तो द क्वेश्चन इज क्या आपके ऊपर वो 62 से 74 वाला प्रोसीडिंग इनिशिएट किया जाएगा? नहीं, दे विल नॉट डू दैट. देन द शो कॉज विल कम अंडर 126 सबसेक्शन 3 and then the order will be passed under 127. Show me 127 again. Yes, sir. Where the proper officer is of the view that a person is liable to a penalty and the same is not covered under any proceedings under section 62, 74, 129, 130. अब इसमें खास बात है, इसमें 122 नहीं लिखा हुआ है. He may issue an order levying such penalty after giving reasonable opportunity of being heard to such person. Now, if there is a violation of anti-profiteering provisions, he will issue a penalty notice under which section? Secondly, this 127 says that if there is if these sections are not applicable, then he will levy penalty under section 127. Therefore, can penalty notice be issued under section 122? Read with 127 because they are writing after giving a reasonable opportunity of being heard. Yes, Anvesh. So the question, if I understand correctly, we are seeing that whether 127 can be read with 122. Yes, I have received the notice. That's the reason. Where the proper officer is of the view that the person is liable to penalty. So for an officer to have a view, पहले एक शो कॉज नोटिस इशू होना चाहिए, because 127, how I read is 127 cannot be independently read without 126. ठीक है. 126 में नोटिस के बारे में बोलते हैं, 127 में सिर्फ ऑर्डर के बारे में बोलते हैं, लेकिन they say that don't directly pass an order, you have to give a reasonable opportunity of being heard. That reasonable opportunity of being heard flows from 126. So 126 is not applicable in 122 cases because it is a fixed sum of penalty. Okay. No, because it is confusing. We are also on a daily basis struggling to understand whether it is an independent or dependent power. So only once we have more discussion on this, probably we will be able to frame a concrete. देखो डिस्कशन होना चाहिए बस. Yes. बाद में तो as you rightly said, the construction will be made by the courts. We are here only to interpret.
and there will always be two views. If there are no two views, it is our duty to found that view which is favorable to the client. Okay, very nice session again. I think tomorrow we are also meeting. Yes, sir. सर अनिमेश बोल रहे हैं सर। हाँ निमेश, 21 नहीं था सर जिसमें टाइम बार्ड हो चुका था, ऑफिसर ने 74 में नोटिस भेजा था मुझे, तो उनका फिर कॉल आया था क्लाइंट को कि 122 में हम नोटिस करेंगे आपको। तो अभी जो हम लोग का जो डिस्कशन चल रहा है उसको तो पावर ही नहीं 122 में नोटिस करने का। नहीं कर सकता है, हाँ कर सकता है। डिस्कशन का कंक्लूजन तो यही निकला है ना कि कर सकता है, 122 में भी नोटिस कर सकता है। 122 क्लॉज 2 है, 127 है, 126 है, ये सब आपको पावर दे रहा है। अच्छा, सो कॉज करने के लिए। यस अन्वेश, No, 122 there is no power, sir. That what I believe is 122 is not an independent section. हाँ 122 is dependent on 73 and 74. अगर 73 74 में टाइम निकल गया है हाँ। then ये 122 नहीं आएगा। यस ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। हाँ, लेकिन इफ आई बिलीव कि 122 में ही नोटिस पॉसिबल है हाँ। तो वो टाइम लिमिट उसका कुछ देयर इज नो मेंशनिंग ओनली बिकॉज टाइम लिमिट इज ओनली रिटन इन 73 74. नहीं टाइम लिमिट है इसमें कोई डाउट नहीं है, टाइम लिमिट तो हर हालत में है इसमें। But if I read it independently, sir, for example, I would just take one example. Ki, let us say that I have made some supply, I have not issued proper invoice. Now, officer has to proceed against me under 73 74. While levying the penalty, he has to either invoke the clauses of 122(1) or 122. अगर मैं बोलूं कि 122 इंडिपेंडेंट है तो 73 74 का टाइम लिमिट अगर गया है and if the officer says that ignore 73 74, I will independently issue you notice under 122. 122 में कभी कहीं टाइम लिमिट का जिक्र ही नहीं है। ठीक है। So the protection of 75 is only available for 73 74. 122 is also not without protection. So 122 has to be read with 73 74. अगर टाइम लिमिट गया है 73 74 का पेनल्टी रिकवरी नहीं हो पाएगा। करेक्ट, ये तो ठीक है। तो सर हम आर्ग्यू कर सकते हैं अब तो? बिल्कुल, मतलब सर 122 को ऑलवेज 73 या 77 के साथ 74 के साथ ही पढ़ना है ना? करेक्ट करेक्ट, इंडिपेंडेंट नहीं इसको लगा सकते हैं। करेक्ट। ओके। Yes, there is one Gujarat High Court decision that exemption notification has to be interpreted liberally. That also you can consider for a discussion. बड़ा मुश्किल है, चलिए। It is just a contradiction between. I would definitely read it, sir. लेकिन when there is a 5-member judgment standing of Supreme Court. No, that view is considered in Karnataka High Court also. That's why. Yes, पढ़ेंगे सर, पढ़ेंगे। चलिए। सर एक और क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है। हाँ। हेलो। यस सर 130 के साथ 122 लगा सकते? नहीं। हाँ जी। 130 is a very independent power. 129 and 130 जो है वो it's a very different offense. It's an offense in transit. जब भी ट्रांजिशन हो रहा है उसमें जो भी ऑफेंस है सिर्फ उन्हीं के ऊपर 129 130 लग सकता है, उसके ऊपर साथ आप 122 नहीं पढ़ सकते हो। 122 जो रेड हुआ, कहीं पे रेड हुआ तो उसमें 130 वो डालते हैं कॉन्फिस्केशन, वो तो नहीं लगना चाहिए ना। माल गोदाम में है, कैसे कॉन्फिस्केशन हो सकता है? अगर माल गोडाउन में है विच इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिट, कभी कभार क्या होता है कि व्हेन वी आर मूविंग द गुड्स फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, हम प्लेस बी में वो गुड्स को अनलोड करते हैं ताकि बड़ा शिपमेंट में हम डाल सके। एंड इन दैट वन डे व्हेन द गुड्स आर ऑलरेडी इन ट्रांजिट, मूवमेंट में है, टेम्पररली अगर वो वेयर हाउस के अंदर रखा हुआ है, देन इट विल स्टिल कम अंडर 129 130। बट द मेन थिंग इज इट मस्ट बी विद इन द ट्रांजिट पीरियड। अगर ट्रांजिट हो चुका है, ट्रांजैक्शन हैज कम टू एन एंड, डिलीवरी हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, गोडाउन के अंदर है, 129 130 हैज नो जुरिस्डिक्शन। नहीं उन्मेष, 130 हैज द जुरिस्डिक्शन। ट्रांजिट हो या ना हो, 130 से कोई लेना देना नहीं है, ये पॉसिबल है। We will have a separate discussion. So again, discussion. Yes. हाँ, पढ़ लीजिएगा। रवि नारायण जी, ये बात पढ़िए। 130 तो पॉसिबल है ना, मान लीजिए रेड हुआ, वहां पर आपको शॉर्ट तो कर रहे हैं, आ रहे हैं, नोटिस तो आ रहे हैं, कर सकते हैं, ट्रांजिट जरूरी नहीं। 130 के साथ 122 जोड़ रहे हैं। 129 ट्रांजिट के लिए, 130 ट्रांजिट और दोनों के लिए है। दोनों के लिए। हाँ। अच्छा, आज का सेशन बता दीजिए अन्वेष का कैसा रहा, और अच्छे लंबे शब्द बोलिए ताकि मोटिवेशन सॉलिड रहे। Sir, excellent. लंबे शब्द। ये तो 122 का एक्सप्लेनेशन तो जबरदस्त रहा सर, तो बहुत अच्छा है। ठीक है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वो मेरा तो यही व्यू है, आज जो भी हो रहा है 73 74 में जाइए, लेकिन वो जो इधर उधर घूम रहे हैं ये जबरदस्त। सर आपका कहना है ना कि लेट फीस 73 74 का पार्ट नहीं है ना?
ओके सर बक्सेटी बोल रहा हूँ। आज का सेशन एकदम बढ़िया था सर। मतलब एक्ट को अपने जो ड्राफ्ट कैसा करते हैं, कोड कैसा उसको इंटरप्रेट करता है, अपना व्यू रखते हैं, वो सबको समझ में आ गया। बहुत बढ़िया सर। Excellent presentation and a very knowledgeable and enriching presentation. Thank you very much. अनमेश जी, आज का सेशन वाकई में बहुत बढ़िया रहा। बहुत सारी नई चीजें और बहुत सारा नया व्यू सुनने को मिला, और इस प्रकार से लॉ को पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। थैंक यू सर। Thank you, Anish ji. Your session is great. इट वाज एक्सीलेंट सेशन था अनवेश जी। और सर हमें ये एक्चुअली पेनल्टी के लिए एक अलग से सेशन रखना चाहिए, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, sir. We'll keep one with the permission of KK sir कि पेनल्टी के हम ऊपर और भी बहुत सारा डिस्कशन होना है। यस सर, गुड सेशन टुडे। पेनल्टी पे सर हम लोग को डेप्थ में करना है। ये 47 के नोटिस हम लोग को ये लोग पेनल्टी में ही भेजते हैं, लेट फी का, GSTR 1 लेट फी का या GSTR 99C का सेपरेटली। तो उसको कैसे काउंटर करना है ये इम्पोर्टेंट है सर। यस, करेंगे सर 122 में पेनल्टी आया था 3B के लिए, उसको मैं 2-3 केसेस को ड्रॉप आउट भी कर दिया। यस, क्योंकि नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। यस सर मैं 23 में भी किया और अभी भी एक नोटिस को ये कर दिया, माफ हो गया। यस सर। महेश जी है, नितिन महेश्वरी, और कौन कौन है? जिनेश जी, भारत पुरोहित जी, जीनल, अमित ठाकुर जी, बोलिए आप लोग। महेश सर बोलिए आप। अनवेश सर, आशीष बात कर रहा था सर। सर एक सेशन सर सर्वे केसेस के लिए भी सर अलग से रखिएगा सर। किसके लिए सर? सर एक सेशन सर्वे 67। आज का सर सेशन बहुत अच्छा रहा सर। हेलो सर, सेशन बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल था और काफी कुछ नया सीखने को मिला है आज के सेशन से, और वी होप दैट सच टाइप ऑफ सेशन विल कंटिन्यू इन फ्यूचर आल्सो सर। यस, एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। सर वो जो जजमेंट हम पढ़ रहे थे अभी, उसको थोड़ा शेयर कर देंगे सर? हमारे वेबसाइट में भी है वो जजमेंट। अमित ठाकुर जी। जी सर। सर आज का बहुत ही अच्छा लगा, और अनिमेश जी का जो जीएसटी पे कमांड है, वो जो इंटरप्रेट करने का, समझाने का, वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा लगा सर, सुन के भी अच्छा लगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला सर। थैंक यू सर। सर देवी प्रसाद बोल रहा हूँ। सही है, देवी प्रसाद जी बोलिए। रानवेश जी ने हमारे डिस्कशन को एक अलग ही लेवल पे लेके गए सर। यस, करेक्ट। ठीक है, तो अन्वेश, वी आर मीटिंग टुमारो अगेन। वी विल डू सर टुमारो। ओके, तो हम लोग अन्वेश के सारी नॉलेज को निचोड़ लेंगे, करेक्ट है ना? कोशिश करेंगे सर। बोल रहा हूँ, नॉलेज ग्रोस बाय शेयरिंग सर। यस, नॉलेज ग्रोज बाय शेयरिंग, दैट्स द थिंग। लेकिन हम लोग का भी जितना निचोड़ेंगे उतना बढ़ेगा सर उनका भी। हाँ, हम लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी के पास नॉलेज है तो उसको पूरी तरह से निचोड़ लिया जाए। यस, ताकि उसका भी बढ़े, हमारा भी बढ़े। यस सर। ठीक है, तो आज मैं वीडियो ऑफ था मेरा। वीडियो ऑफ होने के कारण मैं आपके शूज में आया और मैंने देखा कि कंसंट्रेशन टूटता है वीडियो ऑफ होने के बाद। आदमी चाय की चुस्की भी ले लेता है और फिर वो पूछता है कम अगेन, जैसे मैंने एक बार किया था। तो मुझे लगा कि आप लोग वीडियो ऑफ तो कर रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन वे में एक एक शब्द सुनेंगे तो मुझे लगता है कि और ज्यादा अच्छा रहेगा। बक्सेटी बोल रहा हूँ सर, मैं एकदम कंटिन्यू रहता हूँ। हाँ, नहीं, पता लग जाता है। जी पता लग जाएगा कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, भले आपका वीडियो ऑफ है। यस। आपके सवालों से पता लग जाएगा कि आपने कहाँ मिस किया है, कौन सी लाइन मिस की है, वो पता लग जाता है। करेक्ट। पहले सर वीडियो ऑफ नहीं होता तो सभी लोग एकदम बैठे रहते थे। हाँ, अब उसका फायदा उठा लिया जाता है। So tomorrow the topic should be on what, sir? Interpretation only should I continue, or interpretation. particular section we will? नहीं, इंटरप्रिटेशन। सर बक्सेटी बोल रहा हूँ सर। हाँ, क्या सर? हाँ, बोलिए। मतलब अपन अन्वेष सर का है ना, हर हफ्ते में एक सेशन अगर आपके परमिशन से लेंगे तो डेली लेना, क्या दिक्कत है? मुझे कितना आराम मिल रहा है, आप सोच नहीं पा रहे। सबका नॉलेज भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है ना। हाँ, डेली ले। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप लोग, जितेंद्र जी हैं, बक्सेटी जी है, कुछ ना कुछ सेशन होता रहे आप लोग की तरफ से। मैं बाकी काम करूंगा, मैं आराम से सुनूंगा, मुझे भी तो सीखना है। अन्वेष सर चलेगा ना आपको? सर एक बात बोलूं? के हिसाब से। हाँ, बोलिए। सर
आज मैं सुबह उठ के चाय पीता था, आज मैं सेशन से चाय पीने भी नहीं गया, चाय बनाया भी नहीं अभी तक। That's great. ठीक, चलिए मैं तो बीमार हूँ उसके बावजूद सेशन में हूँ। तो आपको क्या हो गया सर? अरे बुखार, सर्दी, खांसी और क्या होगा। आपको देखे पता चल। In tomorrow's session, we will हम retrospective legislation और retroactive legislation के बारे में we will read in depth. ठीक है, ओके देन बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू। Thank you.